Good morning to all listeners. Students, today we will discuss very important map of class 8th and the name of the chapter is Industries. Students, today we will discuss about major iron ore producing areas continent wise. Students, we all know that iron ore is a raw material and steel is often called the backbone of modern industry. Students, almost everything we use is either made of iron or steel or has been made with tools and machinery of these metals. For example, ships, trains, trucks and autos are made by largely of steel. So students, today we will discuss about these sites. First of all, we will discuss about North America. Here you can see this area clearly in this map. These are the sites of iron ore, and we can see here Canada and United States of America, and the popular minings are Mintech mine, Tilden mine, Keitech mine, United Taconite mine and Hibbing Taconite mine. So these are the main mining areas of North America. After that, now we are discussing about South America. Here you can see clearly the area of Brazil and Venezuela is also famous for iron ore in South America. After that, now we are discussing about Africa continent. Here you can see clearly the area of South Africa, and the main mining area is Khumani mine and Sishen mine. So these are the mining area of South Africa. After that, now we are discussing about Europe. So students, here you can see clearly these sites are for mining of the iron ore producing. So students, here Germany, Russia, France, Spain and Britain, these are the countries for this mining area. And after that students, now we will discuss about Asia. And in Asia you can clearly see these sites in Japan and China also. Students, now we will discuss about India. In India, the main mining areas are Assam, Bihar, Jharkhand, Odisha, Uttar Pradesh and Chhattisgarh. And students, if we talk about Australia, the main famous area for mining is Hamersley province of Western Australia. So students, these were the area of iron ore mining. But students, this map is really very important. Clearly you can see here Pacific Ocean, North Atlantic Ocean, South Atlantic Ocean, Arctic Ocean and Southern Ocean. After that, here you can see clearly Indian Ocean and East Pacific Ocean. So students, these were our 5 main world oceans and the knowledge about mining of iron ore in 6 continents. And in this map you can also see Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, and we all know these are the main longitude of our earth. Students, this is very important map. Why? Because it's giving the information about raw material, and we all know कि कोई भी देश जो आजकल ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं कंट्रीज़, जैसे यूएसए है, जर्मनी है, फ्रांस है, इनकी इनकम अच्छी है, तो इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि इनके पास जो रॉ मटेरियल की फॉर्म है आयरन ओर में, तो उसकी वजह से इन्होंने अपने देश का बहुत विकास किया है, अपने देश को इन्होंने विकसित किया है। हमारे पास भी रॉ मटेरियल है और इसलिए
हमारे लिए जानना ज़रूरी हो जाता है कि अगर हमारे देश में कोई माइनिंग साइट है तो वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है, वो किस स्टेट में है, कब से वहाँ पे माइनिंग चल रही है, और न्यू साइट्स कौन सी हैं हमारे देश की या किसी भी देश की, अगर वो विकसित है तो उसका जो रॉ मटेरियल है माइनिंग से लेके आयरन ओर से लेके स्टूल प्रोड्यूसिंग से लेके, तो उसकी नॉलेज होना एज ए एसएसटी स्टूडेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस मैप के थ्रू हमें कॉन्टिनेंट की भी नॉलेज मिलती है, उनके नेम मेंशन है, हमें ओशियन की जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमने माइनिंग साइट्स किए हैं, इसमें हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और ये एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार रिपीट होते हैं मैप्स, तो इसलिए भी ये हमारे लिए बहुत नॉलेजेबल है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।